4, chapter number 4 of Indian Ethos and business ethics. It talks about approaches to business ethics. Under that, two basic theories we are going to discuss. One theory is called as consequence, consequential theory, and the other one is called as non-consequential theory. Now, this particular name itself suggests that what will be the base of the theory on business ethics. So, consequential and non-consequential. Consequence. So, consequential, the simple meaning of consequential is consequence. Now, I hope that everyone is aware of the meaning of this word consequence. In Marathi or in Hindi, we call it, the meaning of consequences, parinam. Non-consequential is the theory which does not depend upon the consequence of a particular event, is called as non-consequential. But consequential theory, it talks about that the decisions related to business ethics should be taken by the organization on the consequences of that particular decision. If the consequences are going to affect the organization or the employees, then those decisions related to business ethics should not be taken, or some correction should be made so that the consequences will be favorable and not unfavorable. So that is the basic difference between the consequential theory and the non-consequential theory. So we will start with non-consequential theory, which believes that consequences do not and should not enter into our judging of whether actions or people are moral or immoral. What is moral and immoral is decided upon the basis of some standard or standard of morality other than the consequences. And that is the meaning of non-consequentialist theory, which believes that whatever is morally correct, whatever we think that yes, it is correct, on that basis, the decisions related to business ethics are to be taken. We should not worry about what will be the consequence of that particular decision, whether it will be good for the organization or not so good for the organization. So we need not worry about the consequences of that decision. But how the decision is to be taken? It is very simple. It is on the basis of morals. The morals or the values which we have developed since our childhood. On the basis of those morals and values, if we feel that the decision which we are taking is correct, then we should not avoid that decision. We should take that decision. We should not wait for calculating the consequences, that if this decision is taken, then it may
negatively affect our profits. Some of the employees will not be happy with this particular decision, or some of the managers will not be happy with this particular decision. So it will not be good in the long run for the organization. If you start calculating these consequences of a particular decision, then it cannot be called as non-consequential theory. Non-consequential theory, in simple words, we can say that it's a theory which believes that if a correct decision is to be taken, which is based on values, which is based on morals, that decision should be taken without calculating or without foreseeing the consequences of that particular decision. So that is called as non-consequentialist theories. Now the next one is called as consequential theory or consequentialism. Now here in consequentialism, we don't always have to focus on actions. We can also focus on consequences. In non-consequential, we have seen that the focus was on action, that if it is morally correct, if it is based on human values, that decision should be taken. So action should not be stopped because of consequences. That was there in non-consequential. Now in consequential, it says that we should focus on consequences, कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो मॉरली करेक्ट है, वो ह्यूमन वैल्यूज पे बेस्ड है, पर अगर उस डिसीजन की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हानि पहुंचेगी तो हमें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर उस डिसीजन को इम्प्रूव करके लेना चाहिए जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उतनी हानि ना पहुंचे. सो दैट इज द नॉन consequentialism. Now consequentialism is based on the premise that our ethical choices, like other type of decisions, should be based on their consequences. इथिक्स के लिए अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं पर वो डिसीजन अगर ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं है तो वी शुड resist from taking that decision, and that is what consequentialism says. In consequentialism, the consequences of actions are measured against one value. क्या परिणाम होंगे डिसीजन के, वो मेजर किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है किसके अगेंस्ट? द वैल्यू अगेंस्ट. Now this useful value can be something like happiness, welfare, or pleasure. It should be maximized. So if the consequences are good, the act is right. If the consequences are bad, the act is wrong. So this theory talks about consequences. It also talks about that before taking the decision, the organization should try to anticipate what will be the consequences of that decision. If the consequences are positive, then decision is good. If the consequences are negative, then decision is bad. This is what this theory is based upon. Now the next thing is deontological theories or deontological ethics. And the next one which we are going to discuss is teleological theory of ethics. So this deontological ethics, it is derived from the Greek word deon, meaning duty. So
why this particular term is considered as deontological, that is explained in the slide. That deontological is a term which is derived from a Greek word dion, and the meaning of dion is duty. It talks about duties or responsibilities of the employee. Now, deontology is a category of normative ethical theories that encompass any theory which is primarily concerned with adherence to certain rules and duties. Consequences do not matter. Intention is relevant. I am acting in a certain way only if I act for the right reason. That is what deontologists believe. Now, we have earlier spoken two theories. One is consequential and the other one is non-consequential. So this deontological theory comes under non-consequential theories, because non-consequential group of theories, it talks about doing the right thing without thinking about the consequences. If you are doing it right, everything will be right. You need not worry about what will be the consequences of that particular decision, whether it will be good for the organization or it will be bad for the organization. That should not be calculated in advance, that should not be anticipated in advance. That is what the this deontological theory talks about. It talks about consequences do not matter. Deontology is a category of normative ethical theories that encompass any theory which is primarily concerned with adherence to certain rules and duties. Now, in this particular theory, what happens is the employees who are working in the organization, they adhere to the rules and regulations of the organization and their duties. Duties come first, right? जब ऐसी भावना जागृत होने लग जाती है कि मेरी पर्सनल लाइफ से पहले मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, my personal life is far less superior than my duties towards my work. If this feeling starts in the mind of the employee, then we can say that the employee will be an asset to the organization. Now, consequences do not matter. Now, it talks about that whatever your duties are, you should adhere to your duties, you should adhere to your responsibilities without anticipating the consequences of that particular action, of that particular decision. So consequences here do not matter. Intention is relevant. I am acting a certain way only if I act for the right reason. The meaning is very simple. Here, intention is relevant. आपने वो डिसीजन क्यों लिया, आपने वो काम क्यों किया. अगर आप परिणाम कैलकुलेट करके वो काम कर रहे हैं तो इट इज नॉट डिओन्टोलॉजिकल. You are doing that job, doing that work, completing that particular task only for the sake of your organization, for the development of your organization, not your personal development. Then we can say that yes, this example can be categorized as deontological theories. So deontological theory can be categorized under non-consequential theories. Now the next theory is about
teleological theory of ethics. Now, teleological theory of ethics. Now, this particular teleological ethics can be covered or categorized under the consequential theory. Now, in this teleological theory, what happens is we will discuss that also. So, in teleological, now here the meaning of this teleological theory, it comes from the Greek word telos, meaning an end. तो एक ग्रीक वर्ड है टेलॉस, जिसमें से ये वर्ड लिया गया है teleological, and the meaning of this particular word is end. Khatam. The theory looks at the consequences, the results of an action to decide whether it's right or wrong. Now, this theory talks about or believes in the results of the decision. If you are taking any decision, and although it is in good faith, it is based on human values, it is based on moral principles, still, if there is a problem related to the implementation of this, we can say so here consequences are calculated first. What will be the consequences of this decision, whether it will be harmful or it will be good for the overall development of the organization. Now, if it is harmful, then how much harmful if it is, to be calculated. And if it is believed that yes, this is definitely a loss making decision for the organization, then that decision shall not be taken. Because here the consequential theory believes that all the decisions which are being taken by the organization, those decisions should be based or calculated on the basis of consequences. अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा, लॉस मेकिंग होगा. All these things are to be calculated because teleological talks about consequences. A very simple principle is implemented here, and that principle says that the organization is created to make money or to earn profit, and all the organizations should try to stick to this principle of earning more and more profit. So for earning more profit, if organization taking a decision and that decision is not approved or that decision is not implemented, then we should believe that the organization would have calculated the consequences of that particular decision, of that particular action, and that is the reason, that could be the reason why the organization is not interested in implementing that decision in the organization. Last one, for a teleological thinker, the end justifies the means, and thus thinker from this school thought would judge the rightness of an action by the end it produces. So here in consequences, all the decisions are
calculated, and during the calculation, the findings of the calculations are shared, and in those findings it is mentioned very clearly that what is the decision and what could be the after effects of that decision. If it is good for the organization, then you should go with that particular new organization or new strategy. But if the organization doesn't approve it, then their decision should be accepted. So, in simple words, we can say that as it is consequences, all the decisions which are implemented in the organization are based on the consequences pattern. कि अगर हमने ये डिसीजन नहीं लिया तो हमारा लॉस हो जाएगा, अगर हमने ये डिसीजन लिया तो हमारा फायदा हो जाएगा. So this all is about the decision making. Now we will move on to the next part, and next part is the Kohlberg's theory. Under that, three levels or stages are given, then age range is given, and the description is also given. In description, what is expected in these stages is written very clearly and carefully. Now, now Kohlberg theory is related to the levels or stages in the life of a person. It also talks about the age range when we can concentrate on the child of a person, or when parents can concentrate on that particular child. And that is what is written in Kohlberg, Kohlberg's theory. Now, in Kohlberg's theory, they have mentioned some levels are mentioned, which you can see in the slide itself. And in a level oblique stage, under that, obedience and punishment is given, then self-interest, then conformity with interpersonal accord, and authority and social order. So that is written under the level stage. Now in age range, obedience and punishment, against that it is infancy written. Self-interest, against that preschool is written. Conformity and interpersonal accord, school age is written. And authority and social order, against school age is written. Now here we need to understand why three levels are given, and for every level why separate age bracket is mentioned. So level 1 of any employee, any individual, any human being, it starts with obedience oblique punishment. What is the meaning of obedience? Anyone? Yes, anyone? I hope my voice is clear to all. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, so I'm audible. Mohit sir is responding, but students are not. Yes, anyone who is aware of the meaning of obedience?
Come on, fast. No one. Obedience is very simple, following the rules and regulation. Under the age range, infancy is written. Infancy is the early childhood, when the child is very small. And description, no difference between doing the right thing and avoiding punishment. So this culture of ethics, that what is right, what is wrong, what is morally correct, what is legally correct, all these things, this training, this education starts from infancy. So level 1 is obedience and punishment. If parents often give instructions to the small child that if you do this, then we will give you some incentive. But if you do not do this, or if you do this, then you will get a punishment. एक छोटा बच्चा है जो स्कूल में जाता है, उस स्कूल में उसके कई सारे फ्रेंड्स हैं, उसके साथ एक फ्रेंड बैठा है जो नया पेंसिल बॉक्स लेके आया है। अब ये जो बच्चा पास में बैठा है, उसको उसकी पेंसिल बॉक्स में से एक पेंसिल बहुत पसंद आई। जब वो बच्चा पानी पीने के लिए बाहर गया, तो इस बच्चे ने पेंसिल बॉक्स में से एक पेंसिल निकाल के अपने बैग में रखी। नाउ व्हेन दिस चाइल्ड गोज होम, जब उसकी मम्मी पूरा उसका बैग चेक करती हैं कि टिफिन निकाल लिया, बाकी सब चीजें निकाल के रख दी, तब उनको एक पेंसिल एक्स्ट्रा दिखाई देती है। दैट पेंसिल, शी इज अवेयर ऑफ दैट इज नॉट हिज पेंसिल, पेंसिल ऑफ हिज हर चाइल्ड। बच्चे को बुला के पूछा जाता है कि ये पेंसिल आपके पास आई कहाँ से बेटा? बच्चे ने ईमानदारी से बता दिया कि यहाँ से ये पेंसिल आई। दिस इज the mother feels morally it is incorrect. It is not correct that without the permission of someone, if you are taking his particular thing without his permission, that will amount to stealing. चोरी करने के समान है वो। तो जैसे ही माँ को ये पता चलता है कि इसने बिना पूछे उस बच्चे से अपने बैग में एक पेंसिल चुपके से डाल दी, क्योंकि वो पेंसिल वो बच्चे को बहुत अच्छी लगी। नाउ एट दिस पर्टिकुलर एज से ऑफ 4 years, 5 years or maybe 6 years, the child is not aware of what is right and what is wrong. He got attracted, that is why he took that particular pencil. He is not aware what is stealing, what is right, what is wrong. But here, if the mother gives the child punishment, एक थप्पड़ मारा, डांटा, तो वो चाइल्ड को अभी से ही समझ जाएगा कि विदाउट परमिशन किसी के बैग में से अगर हम लोग कुछ निकाल रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड वैल्यू, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड मॉरल बिहेवियर, that is absolutely not correct. So we should avoid that. वो बच्चा जब उसकी माँ ने एक थप्पड़ मारा और उसको डांटा, उसको चिल्लाया, उसको पनिश किया, immediately the child comes to know am I audible? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you.
So here, obedience, how the child is being taught. माँ बाप कैसे बच्चे को सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चोरी करना बुरा काम है, झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, टीचर को उल्टा नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीजें माँ बाप बचपन में अपने छोटे बच्चों को बताते हैं। तो अगर माँ बाप ये सारी चीजें वो बच्चे को बता रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे के दिमाग में एक बात फिट हो जाती है, और वो ये है कि अगर गलती की तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर अच्छा काम किया तो इंसेंटिव मिलेगा। सो कोल्सबर्ग थियरी इज दैट ethical concepts or ethics, morals, values cannot be developed within a short span of time. It takes time to develop. So since childhood, if the child is brought up in that values, automatically the child receives that value, and when he or she becomes adult, that can be seen from the behavior or the working pattern of the employee. But on the same occasion, if the same example, but if the results, if the parents are different, for example, माँ ने देखा कि पेंसिल तो नहीं आई है, पेंसिल तो मेरे बेटे की नहीं है, माँ ने पूछा, बेटे ने बता दिया कि मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ ही बैठता है उसके बैग में एक बहुत सुंदर पेंसिल थी, पेंसिल बॉक्स था, उसमें 10 पेंसिल्स थी, उसने मुझे दिखाया, मुझे एक पेंसिल बहुत पसंद आई, जैसे ही वो पानी पीने के लिए गया, मैंने उसका पेंसिल बॉक्स खोला, उसमें से एक पेंसिल निकाल के अपने बैग में रख दी। यहाँ पर माँ ने उसको डांटने की जगह, समझाने की जगह अगर बोला कि कोई बात नहीं बेटा, चलता है, आपने ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो here the child will not understand that whatever he has committed today, whatever he has done today is not at all correct, it is 100% wrong. तो वो इतना छोटा बच्चा है, उसको अपना दिमाग नहीं है, उसको नहीं समझेगा। माँ ने 2 थप्पड़ मारे, चिल्लाए, डांटी और पनिशमेंट दी, और फिर उसको समझा के बताया कि बेटा दिस इज नॉट करेक्ट, you cannot behave in this manner, you have to behave like this. अगर ऐसा किया तो वो जल्दी से समझ जाएगा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो गलत है, अगर मैं चोरी करूंगा तो गलत है, अगर मैं किसी अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करूंगा या पेरेंट्स की इज्जत नहीं करूंगा तो गलत है। ये सब उसे बचपन से बताया जा रहा है, जहां पर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, जहां पर वो अच्छे बुरे की समझ नहीं रखता, यहाँ पे पेरेंट्स उसको समझाते हैं। पर सेम जो हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, वहां पर माँ ने बिल्कुल डांटा नहीं, कोई बात नहीं, अगर ऐसा बोला गया तो वो बच्चा क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम शायद कुछ और चोरी कर सकता है, उसके बाद भी माँ ने कुछ नहीं बोला तो वो नेक्स्ट टाइम और भी कुछ ज्यादा बड़ा हाथ कर सकता है, बिकॉज नाउ द चाइल्ड इज नॉट अवेयर दैट ही हैज कमिटेड एनीथिंग रॉन्ग। माँ कुछ बोल नहीं रही है, तो बच्चे को क्या लगता है जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसे इससे बढ़ावा मिलेगा और वो आगे और गलत काम कर सकता है। सो कोल्सबर्ग थियरी ऑफ ethics, it talks about that how these ethical principles are developed in the individual, right? तो बचपन से कैसे ये डेवलप होते हैं, और ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का जो एज रहता है वो अर्ली एज रहता है,
Next is self-interest. Self-interest is प्री स्कूल, जहाँ पर केजी के बच्चे जाते हैं, या लोअर केजी हो या फिर अपर केजी हो, वो बच्चे. नाउ हियर द इंटरेस्ट शिफ्ट्स टू रिवॉर्ड्स rather than punishment. Effort is made to secure greatest benefit for oneself. यहाँ पर बच्चा, उसका थिंकिंग अलग हो जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट्स पाना चाहता है माँ बाप से. यहाँ पर से शुरू हो जाता है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स आए तो आपको चॉकलेट दी जाएगी, अगर आप रोज सुबह जल्दी उठोगे और जल्दी तैयार हो जाओगे बेटा तो फिर आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा. तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स की बातें आने लग जाती हैं. Then here the child starts believing, if I complete the task given by my parent, I become eligible to get an incentive. ये बचपन से ही बच्चे को पता चलने लग जाता है कि मुझे काम कौन बता रहा है, मुझे टास्क कौन दे रहा है, मेरे टीचर दे रहे हैं या फिर मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं. पर दोनों भी मुझे बोलते हैं कि अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा. It is not that every time the incentive is in monetary form. Many a times it is non-monetary incentive that also plays a motivating role. For example, एक छोटा बच्चा नर्सरी का ABCD टीचर ने लिखना सिखाया, वो बच्चे ने बिना किसी गलती के ABCD लिख दिया और टीचर को दिखाया. टीचर ने ओके किया, नीचे वेरी गुड लिखा और उसके नीचे 5 स्टार बना दिए. नो चॉकलेट, no 10 rupee note was given to the child, but by writing very good on the notebook of that particular child and by giving that child 3 stars, 4 stars or 5 stars, and by showing every other student in the class that look what he has written, he without any mistake he has written A to Z, and that is why I have given him very good and 5 stars. तो यहां से ही बच्चा सोचने लग जाता है कि जो भी टास्क अगर मैं बिना किसी गलती के कंप्लीट करूंगा तो मुझे इंसेंटिव मिलेंगे, मुझे बेनिफिट मिलेंगे. और यही बच्चा जब बड़ा होके कंपनी ज्वाइन करेगा तो उसकी थिंकिंग वही रहेगी जो बचपन में थी, कि मुझे जो टास्क दिया गया है अगर मैं वो बिना किसी गलती के पूरा करता हूं तो कंपनी मुझे इंसेंटिव देगी, प्रमोशन देगी. एंड दिस इज द क्वालिटी रिलेटेड सेल्फ इंटरेस्ट. यहां पर बच्चा क्या देख रहा है, अपना इंटरेस्ट, कि मैंने अच्छे से अगर ABCD लिख दिया तो मुझे वेरी गुड भी दिया टीचर ने, 5 स्टार दिए, घर पे आने के बाद मम्मी और डैड को दिखाया कि लुक व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम द टीचर, तो दोनों पेरेंट्स खुश. पेरेंट ने भी उसको चॉकलेट दिया, फ्रूट्स दिए और कुछ जो उसकी पसंद की चीज थी वो दी. तो यहीं से बच्चे को पता लगने लग गया कि अगर मैं टास्क पूरा करता हूं तो मुझे इंसेंटिव मिलता है. तो यही बच्चा जब बड़ा होके जॉब करेगा तो उसकी थिंकिंग वही रहेगी, जो टास्क मुझे दिया गया अगर मैं बिना गलती के उसे अच्छे से पूरा करता हूं तो आई एम बिकम एलिजिबल टू गेट मोर इंसेंटिव्स, मोर मनी, more profit, more benefits. Now the next one is conformity and interpersonal accord, that is school age. ये school age में develop होना शुरू होता है. We are all talking about the ethical principles which
डेवलप्स इन द चाइल्ड, कि कब शुरू होते हैं और कैसे वो आगे भी वैसे ही बरकरार रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंफर्मिटी एंड इंटरपर्सनल accord, दैट इज स्कूल एज. तो इसमें क्या होता है, द गुड बॉय गुड गर्ल लेवल effort is made to secure approval and maintain friendly relation with others. तो इससे पहले जो था सेल्फ इंटरेस्ट, वहां तक वो बच्चा प्री स्कूल में है, नर्सरी में है. ये स्कूल एज मतलब जब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चा रहता है, दैट इज स्कूल एज. जब तक वो टीनेजर नहीं बन जाता तब तक वो स्कूल एज. तो नए नए फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप डेवलप होती है. तो यहाँ पर हर कोई एक गुड बॉय या गुड गर्ल बन के रहना चाहता है. क्यों बन के रहना चाहते हैं? बिकॉज एवरीवन वांट्स दैट most of the students should come to me and they should try to develop friendship with me. सबकी यही इच्छा है कि सारे क्लास के बच्चे मेरे पास आए, मेरे से बात करें, मेरे से फ्रेंडशिप करें. पर वो कब करेंगे? व्हेन आई विल बी रिगार्डेड एज अ गुड बॉय इन द क्लास और अ गुड गर्ल इन द क्लास. टीचर जिस लड़के की या जिस लड़की की तारीफ करते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ओबीडियंट है, बहुत सिंसियर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ज्यादातर स्कूल के क्लास के बच्चे वो बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं. तो टीन ये प्री स्कूल एज में क्या होता है कि यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहना सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि सब अपने पास ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं. नाउ इफ दिस प्रिंसिपल इज डेवलप्ड, how this can be implemented in the organization also. कि वहां पर हमने देखा कि बच्चे को पता है अगर मैंने टास्क पूरा किया तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा, तो वो मेहनत करता है और टास्क पूरा करने की कोशिश करता है. जब वो एम्प्लॉय को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि दूसरे लोग उससे दोस्ती करना शुरू करना चाहते हैं कि कैसे ये इतना अच्छा काम कर रहा है, कैसे ये इस बार का बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर बना, कैसे इसके काम में कोई गलतियां नहीं होती, इसीलिए इसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है. सो ऑल दीज थिंग्स, और कैसे ये व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ किसी का झगड़ा नहीं हो रहा, सब इसके साथ अच्छे रिलेशन में है, ये भी सबके साथ अच्छे से बात करता है. जो वो गुड बॉय की इमेज जो बचपन में वो बच्चे ने बनाई थी, वही इमेज वो बच्चा आगे चल के अपनी जॉब में भी इंप्लीमेंट करता है. नेक्स्ट वन, authority and social order. Again, it is developed in the school age. Orientation towards fixed rules. The purpose of morality is maintaining the social order. Interpersonal accord is expanded to include the entire society. Now, authority and social order. Social order. Social order means the order of the society in which we are living. हर सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं. अगर सपोज हम लोग रिलीजन के बेस पे देखेंगे सोसाइटी, तो अगर हम लोग क्रिश्चियन रिलीजन की बात करेंगे तो दे आर मोर ब्रॉड माइंडेड, देयर कल्चर इज मोर ओपन, दे अलाउ द चिल्ड्रन, मे बी बॉय गर्ल, to wear
say, more modern clothes. But when we talk about the Hindu religion, it is less open than the Christian religion. यहाँ पर बच्चों को उतना ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलता जितना क्रिश्चियनिटी में मिलता है। यहाँ पर उनसे थोड़ा सा कम फ्रीडम मिलता है। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, पेरेंट्स डेफिनेटली हैव अ से। पेरेंट्स डिसाइड इंस्टेड ऑफ द चाइल्ड। एंड व्हेन वी कंपेयर इट विथ इस्लाम और मुस्लिम कल्चर, वहां पर क्या होता है, क्रिश्चियन कल्चर में ज्यादा फ्रीडम मिला, हिंदू कल्चर में थोड़ा कम हुआ फ्रीडम, और मुस्लिम कल्चर में और कम हो जाता है फ्रीडम बच्चों का। तो यहां पर क्या है कि फिक्स्ड रूल शुरू हो जाते हैं, कि धीरे धीरे हम लोगों को पता चलने लग गया कि हमारे को कितना रूल्स फॉलो करने हैं। अगर वो एक आदत लग गई कि दीज आर द रूल्स विच आर डिजाइंड बाय द सोसाइटी, कि अगर हमारे को सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के नियम फॉलो करने पड़े, तो ये बचपन से ही अगर वो बच्चे को आदत लगती रहती है, तो आगे चल के जब वो जॉब करेगा तो ज्यादा चांसेस है कि ही विल नॉट बी ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज ही नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स सिंस चाइल्डहुड। Now the next one is social contract. Social contract ये टीनेज में शुरू होता है। यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट और रेसिप्रोसिटी, morally right and legally right are not always the same. Utilitarian rules that make life better for everyone. Now mutual benefit, जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं तो it is very difficult to counsel them, क्योंकि 12 साल बाद, 13, 14, 15 साल के बाद बच्चों को थोड़ी समझ आने लग जाती, वो अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करते हैं या लेना चाहते हैं। यहां पर अगर पेरेंट्स उनके ऊपर डिसीजन फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो देयर कैन बी क्लैशेस। यहां पर क्लैशेस होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती। व्हाई? बिकॉज नाउ द टीनेजर, द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग दैट नाउ आई एम अ 15-year or 16-year, so I can understand that what is right and what is wrong. So instead of always parent telling and I following, I can take decision, and on that decision I can follow. So it is not that always here the teenagers will be listening to the parents, and on number of occasion what they do is they exactly do the opposite of what their parents are advising. क्यों ऐसा? क्योंकि वो एज वैसा रहता है जहां पर खुद का टेस्ट करने लग जाते हो, और यहां पर अगर पेरेंट्स ने उनको अच्छे से काउंसिल किया, उनको बताया कि आप डिसीजन ले सकते हैं, पर कौन सा डिसीजन आपने लेना चाहिए, कौन सा हमने लेना चाहिए,
डिसीजन लेना है तो क्या आपको पता होना चाहिए, क्या उसके कॉन्सेक्वेंसेस हो सकते हैं, ये कैसे पता होगा आपको? ये सारी चीजें जब पेरेंट अगर उनको अच्छे से समझा के बता सकते हैं, एंड व्हेन दे गिव some sort of freedom to take small decisions under their supervision, then this child, when he starts working in an organization after say 5 years, or whenever he feels that now I can do my job very well, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जब एम्प्लॉय को ये लगने लगता है कि अब मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता हूं, अब मुझे बार बार इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है सुपरवाइजर को या मैनेजर को, नाउ आई कैन डू माई जॉब वेरी वेल, वहां पर अगर मैनेजर बार बार इंस्ट्रक्शंस देगा तो इट इज नॉट good for this particular gentleman also, employee, because why? Because now he feels that I know my job well, so I can take small decision for my job, and that is covered under the social contract. Next one is universal principle. Universal principles is adulthood. Under that, morality is based on principles that transcend mutual benefit. Now, this universal principles are very simple. The principles which are same when they are applicable in say one area or in other area, in one city, in other city, one state, other state, maybe in one country and in other country also. These are called as universal principle. और ये सब हमारे को कब पता चलता है? When we become adult. Honesty is the best policy. Right from childhood, we hear this. But when we become adult, then we actually understand it. For earning profit, we should not rely on a say inhuman or immoral practice. This we learn in our childhood days कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, अगर पैसा कमाना है, तो गलत तरीके से नहीं कमाना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, सही तरीके से कमाना चाहिए। ये हम लोग बचपन से सुनते हैं। We are in a better position to understand that. Here, what happens is that morality is based on principle that transcend mutual benefit. Moral values, यहां पर एम्प्लॉई हमेशा ये सोचता है कि अगर मॉरल वैल्यूज कैसे होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज ऐसे होने चाहिए जिससे दोनों को फायदा हो। दोनों मतलब कौन? दोनों मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ये इंप्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई गलत तरीके से हम लोग काम नहीं करेंगे, जितना प्रॉफिट है उतना दिखाएंगे, जितना टैक्स होना चाहिए, पे करना चाहिए, उतना ही टैक्स पे करेंगे। तो अगर ये सब चीजें इंप्लीमेंट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय को लगता है कि दिस शुड बेनिफिट बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉय। इट शुड नॉट हैपन that only organization is getting the benefits.
and employees are not. So here employee expect mutual return. Mutual return means both should be benefited, right? So we will stop here as it is already 9. It is more than 9. And tomorrow we will start with a new topic. In case you have any query about this, you can raise that query. We will first solve that query in uh, tomorrow's session, and then we will move to the another topic. So thank you Okay, everyone for sir. being present in today's session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.